So I was All India rank 1. There was one unreserved seat in radiology names. I was like, this is made for me. I have to take it. I just trusted my instinct on that. We are talking about challenges for students and everything. Yeah. What were the real challenging times for Zainab? Pandemic hit and everything kind of changed. I lost my dad, found out I was having Zara, multiple issues, career change, and my pregnancy was very complicated. Like I actually had COVID when I got diagnosed with pregnancy. तो दैट वॉज वन ट्रॉमा. उसके बाद भी माई प्रेगनेंसी वॉज फुल ऑफ कॉम्प्लिकेशंस. आप कोई भी डिजीज उठा लो, ऑब्स गई नहीं मेरे पास थी. When was the day you thought नहीं अब हो गया है, अब मेरे को टीचर बनना है, I don't want to pursue radiology anymore? Because of the lockdown, my teaching started really through Unacademy. I was just taking it कि ठीक है अभी टाइम मिल रहा है, nothing much to do, let's teach. I anyways enjoyed teaching. So that kind of distracted me from what I was going through, you know, in my pregnancy issues. So throughout my pregnancy, I was teaching all 19 subjects, everything, you name it, and I would just study and I would teach it. तो वो पढ़ने पड़े होंगे वापस? बिल्कुल. So I would take this series called Midnight Express, you know. तो मैं दिन भर पढ़ती थी, रात को 12 बजे स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी. मेडिकोज रात को पढ़ते हैं, so 12 to 1 मैं पढ़ाती थी. अभी अगर आप मेरा स्ट्रेंथ पूछोगे, इट्स माई कनेक्ट विद द स्टूडेंट्स, दैट आई अंडरस्टैंड देम वेरी वेल कि वो कहाँ पे वीक है, क्या उनका स्ट्रगल है. इट्स बिकॉज आई हैव ऑलवेज टॉट लाइफ, सो माई कनेक्शन वॉज ऑलवेज मेंटेन्ड. सो या that's a great thing to say, right, that I teach doctors. So yeah, nice. That's what I take a lot of pride in. Hello everyone, welcome to Delhi Docs. Our today's guest is very special. I invited her in December to make a very special Christmas episode for Delhi Docs, and she came in December. However, the calendar moved 365 days, but it was definitely worth the wait. Thank you, Dr. Zainab. Thank you for coming to this podcast. Thank you so much. First of all, I want to apologize for, you know, rescheduling so many times, and you've been so accommodating. So thank you so much for having me here. It's absolutely my pleasure. It's pleasure is all ours. Actually, we were residents in AIIMS together at one point of time. Yes. And I think that's the connection that she gladly accepted to come here. Absolutely. And I'm so happy to see the, you know, great content you're putting out and to see you rising in your profession. So it's very, very heartening for me, and I'm very proud to be here. टाइम मिलता है देखने का पॉडकास्ट? बिल्कुल मिलता है. रवि का जरूर देखा है. So yeah, no, I've definitely seen a lot of those, and you know, you're doing really great. Especially you know, जो residents देखते हैं and they get to learn a lot about orthopedics, about residency in general. So it's a great platform. Thank you so much. So I'll ask you one question. Yeah. Who is Dr. Zainab Vora? Is she a doctor, a radiologist, a teacher, a mother, a homemaker? या और भी कोई रोल है जो बचा है, but what defines Zainab really? I think all of us, you know, I don't want to say that I'm the only one who's doing like so many things. All of us have different roles in life that we're, you know, trying to manage somehow. So yeah, I've been blessed to, you know, be doing so much, and I'm trying to do everything that you've mentioned, you know. So yes, I am a doctor. I've done my MBBS. I've done my MD in radiology from AIIMS Delhi, and then I went on to my teaching journey. So yeah, I started off as a radiologist, but now I'm full-time into teaching. So I teach students who are preparing for NEET PG. That's a very difficult time, like all of us have gone through it. So it's a very difficult time for most students, and you know, I felt that it was only right that if I'm doing it, I give it my all and I give it my 100%. So I do that. I also teach radiologists, radiology residents. So yeah, I am connected to radiology through teaching, but yeah, so I'm connected to medicine completely through teaching now. Okay. And yeah, I'm mother to Zara, which is one full-time job in itself, and it's the biggest blessing of my life. So that is a role I cherish obviously the most. And yeah, so trying to do multiple things, and yeah, hopefully everything works out. And what do you call yourself? For example, if you meet someone new in a party or a networking event,
Yeah. How do you introduce yourself? It's a gradual switch which I am making from a radiologist to a teacher. So yeah, I do introduce myself as a radiologist, but yeah, I say Okay. that I teach doctors now. So yeah, that's a great thing to say, right? That I teach doctors. So yeah, that's Nice. what I take a lot of pride in. Yeah, that's Yeah. great. So abhi radiology wala part is completely off, like Yeah, practicing part. I'm not practicing. I sometimes review reports when needed, but I'm not Okay. full time into reporting. Okay, Yeah. so you still maintain the license? You're still Oh yeah, registered? yeah, absolutely. Yeah, that license never goes away. It's Yeah. completely my choice when I want to start practicing, if at all. So yeah, I can always report, and I do review cases, a lot of times now also. But yeah, not full time into it. Don't really get time. So if अच्छा, I can't do justice to something, then there's no point just doing it. absolutely, Yeah. absolutely. हाँ नहीं अच्छा है. One thing I would like to ask is, जब ये switch हुआ, उसकी हम्म starting कैसे हुई? Like, हम्म when was the day you thought नहीं अब हो गया है, अब मेरे को teacher बनना है, I don't want to pursue radiology anymore? Was there actually a time like? So basically, I was doing my senior residency from AIMS Delhi in radiology, as that's what I was doing. And then the pandemic hit. So me and Ravi, my husband, both of us were supposed to go to the US for our radiology and his neurosurgery fellowship. Okay. So way back in 2020, right? So we were all set to write CS. In fact, मेरा CK step 1 सब हो चुका था, and उसी साल CS लिखना था, and the pandemic hit, and the exam got cancelled. Literally, जो exam देने जाना था अगले महीने, they Oh. said it's cancelled indefinitely because of the pandemic, right? And you There was- had done your senior residency? I was doing my senior residency at the Okay. point. So the timeline was कि SR-ship खत्म होएगा and we'll go to US for a few fellowships and then figure out कि वापस आना है नहीं आना क्या करना है. एक second, I would like Yeah. to interrupt. Yes. When did you get married in your academic journey? We got married we got married pretty early, like relatively, in our second year of JR-ship. So 2016. Oh, okay, Yeah, nice. so- And Ravi is your batchmate. He's Is my it? MBBS Ah. batchmate. Yeah, my best friend forever. Nice. BFF. So yeah, he's Ah. been my batchmate, and we got married in JR-ship. He was doing his neurosurgery residency, Okay. and yeah, but just we were married on paper. We literally didn't see a lot of each other during residency because his residency was so hectic in neurosurgery. Absolutely. So yeah, so anyway, so we thought we'll finish our residencies and we'll go to the US for some additional training and then see if we want to stay there, we want to come back. So that was the plan. Okay. Then the pandemic hit and everything kind of changed because of the lockdown. So I had some time on my hands. So that time Unacademy approached me कि आप पढ़ाओ अच्छा. थोड़ा सा. Hmm. And those were live sessions. उस time पे online PG teaching का market was more or less recorded lectures. There were 1 or 2 apps which were there जहाँ पे faculty recorded lectures Okay. पढ़ाते थे. Unacademy उस time पे UPSC, NEET, UG में काफ़ी बड़ा बन रहा था. So NEET PG very small segment for them. So there they said कि आप बस online live classes पढ़ाओ radiology. I said why not? तब quarantine period भी होता था, time ज़्यादा मिलता था. So I said why not? So that's how my teaching started really through Unacademy. I was just taking it कि ठीक है अभी time मिल रहा है, nothing much to do, let's teach. I anyways enjoyed teaching. PG aspirants को पढ़ा रहे थे? PG aspirants, Okay. NEET PG aspirants, yeah. Hmm. So I was teaching radio. That's how I started teaching. Obviously, ki radiology padhao. So that is what I was doing for 2020. The second wave of pandemic, when it hit, my father got very sick actually. So Oh, okay. at that point, I was about to finish my senior residency. My final 6 months were pending, and my father got so sick. We moved to Rajkot for a few weeks, but he couldn't make it. And that's sad. life का timeline ऐसा हुआ. My dad passed away, and a few days later, I found out I was pregnant with Zara, and okay. मेरा pregnancy was very complicated. Like I actually had COVID when I got diagnosed with pregnancy. Shit. So that was one trauma. उसके बाद भी my pregnancy was full of complications. आप कोई भी disease उठा लो, ऑब्स गई नहीं मेरे पास थी. So I had GDM, I got dengue to on top of it. I had IUGR. So very traumatic. So उस time पे I had to take a call whether I focus on my health, both mental health, physical health, सब कुछ screwed up था उस time पे. So I thought, all right, now is a good time to not practice or not to do SR-ship. So I resigned from my senior residency at that point. And मुझे सबने बहुत रोका that why are you doing this? 6 months रहते तुम्हें आराम से एम्स में फैकल्टी पोस्ट बाद में तुम अप्लाई कर सकते हो, तुम खत्म तो करो.
I said no, I don't want that option. मुझे नहीं करना है. So I quit my job, I quit my SRship, and at that point, I thought I'll teach. So that was a good outlet for me. So that's how teaching actually became a happy accident. And उस time तक मैंने radio more or less पढ़ा दिया था in that 1 year. And I had a good bond with students. तो students मुझे बोलते थे मैम ये भी पढ़ा दो, ये भी पढ़ा दो, बाकी subjects के topics. So I would take this series called Midnight Express. अच्छा, तो मैं दिन भर पढ़ती थी, रात को 12 बजे students को पढ़ाती थी. मेडिकोज रात को पढ़ते हैं, so सही बात 12 है. to 1 मैं Oh, पढ़ाती थी. wow. And live, and it was a very happy thing that I started with live sessions. अगर मैं recorded से शुरू करती ना, कभी वो connect नहीं बन पाता. अभी अगर आप मेरा strength पूछोगे, it's my connect with the students, that I understand them very well, कि वो कहाँ पे weak है, क्या उनका struggle है. It's because I've always taught live, so my connection was always maintained. So that's how I started teaching other subjects. So I always liked studying. I'm very nerdy since a child, as all of us Yes, are. yes, your academic Yeah. excellence तो हाँ, दिखती है मतलब papers पे हाँ, भी. मतलब मैं पढ़ाकू हूँ and I'm very proud of it. So I converted that. So I would study during the day and then I would teach them, in the night. So that kind of distracted me from what I was going through, in my pregnancy issues. So that way teaching actually healed me, and Okay. it acted as a distraction from what was going on. So throughout my pregnancy, I was teaching all 19 subjects, everything, you name it, Oh, and I would wow. just study and तो I वो would teach पढ़ने it. पड़े होंगे वापस? बिल्कुल पढ़ती थी और फिर पढ़ाती थी. So धीरे धीरे, so that's how everything happened. Then Zara was born, and since then, as Zara has grown up, my career has grown with her. Nice. So yeah, so I started consolidating everything which I taught here and there, and that's how BTR came to be. It was years of here and there सारे puzzles के pieces थे, and then it all came together कि let's do something with 19 subjects, and it can't be so Condense expansive. करने के उसको लिए. कंडेंस करते हैं ना, इवेंचुअली हमारा बॉडी तो एक है ना, हमने 19 सब्जेक्ट्स बना रखे हैं. सो Yes. इफ वन Makes sense. पर्सन हैज टू क्रैक दैट एग्जाम, देन इट्स capable that one person can teach it also, right? So that's how everything kind of came together. So it's not overnight. It's been like 5 years I've been studying, consolidating, and it's never ending. You can never learn and finish medicine कि अब हो गया, पढ़ लिया सब कुछ. हाँ. I'm still learning every single day. Absolutely. And that's what I tell my It's still students. not boring. It's still not boring. I enjoy it. Acha. I think the day I stop learning, the day I stop enjoying, I'll stop teaching. So that's what it is, that you are constantly learning, and then teaching is such a fulfilling job that way. आप जितना Absolutely. पढ़ाते हो उससे ज़्यादा आप सीखते ही हो स्टूडेंट से. मेरे yeah. साथ ये हुआ था जब मैंने एम्स का एग्जाम क्लियर किया. आफ्टर Yeah. रीडिंग दोज 19 सब्जेक्ट्स आई वाज श्योर कुछ सब्जेक्ट्स को मैं लाइफ में हाथ नहीं लगाऊंगा. Absolutely. इट इज सो डिफिकल्ट. आई कैन नॉट इवन इमेजिन कितना मुश्किल रहा होगा टू रीड Yeah. फार्माकोलॉजी अगेन, True. पैथोलॉजी अगेन, बायोकेमिस्ट्री, मतलब कुछ सब्जेक्ट्स तो पीएसएम फॉर दैट मैटर. Yeah. Going back to yeah. them. I hate अनैट एक्चुअली. तो अनैट, अभी भी मैं हाँ. अनैट पढ़ाना होता है तो मेरा मन खराब हो जाता है कि अरे यार अनैट नहीं पढ़ाना, बिकॉज आई जस्ट हेट इट. रेडियो करने के बाद आपका अनैट हाँ, मतलब स्ट्रॉन्ग strong होना होना जरूरी चाहिए. है. बट Absolutely. स्टिल दैट हेट डजंट गो अवे. सो हाँ. या वो तो है, मतलब दैट इज समथिंग विच, बट आई हैव स्लोली स्टार्टेड एंजॉयिंग दो सब्जेक्ट्स आल्सो. सो या कुछ चेंज लगा. जैसे हम लोग प्रिपेयर करते थे, दैट वाज अ वेरी डिफरेंट टाइम. या नाउ इट इज डिफरेंट. सो Hmm. एग्जाम के स्ट्रक्चर में कुछ चेंज लगा या Yeah. रेजिडेंट्स की अप्रोच में कुछ चेंज लगा? Oh yeah, क्या absolutely. चेंज लग रहा है बहुत ऐसा? डिफरेंट है. मतलब it's become so competitive now that unless you are very thorough with your concepts and it's not just superficial. हमारे टाइम पे ऐसे होता था कि चलो हाँ. थोड़ा बहुत ऊपर, हम तो बुक्स पढ़ते थे, गाइड बुक्स पढ़ते थे. राइट. अब वो सब कॉन्सेप्ट नहीं है. अब आपको उनको टू द टी कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा हर एक चीज का. दैट्स व्हाट द एग्जाम्स आर टेस्टिंग. दे आर नॉट टेस्टिंग सुपरफिशियल नॉलेज एट ऑल. सो इट्स बिकम सो कॉम्पिटिटिव नाउ, अच्छा. एंड सारे बच्चे इतना वेल रेड है. लाइक यू विल एटलीस्ट सी अ कोहॉर्ट ऑफ 50,000 पीपल हु ऑलमोस्ट नो इक्विवेलेंट टू वन अनदर. अब वो 50,000 लोग इक्वल नॉलेज के साथ, इक्वल स्किल के साथ compete कर रहे हैं इन अ 200 MCQ एग्जाम. So it's very tough and it's very heartbreaking also, when you see students जो इतना हार्ड वर्किंग होते हैं पर उनका रैंक नहीं आता because of 1 MCQ or 2 MCQs. ओ इतना कॉम्पिटिटिव. बहुत 1 and 2 competitive है. makes all the difference. Oh yeah, there is
so much clustering with even 2 MCQs. आप देखोगे कि पूरे 1000 लोगों के marks more or less same है, so Oh. it's very competitive now, and you have to study so much, so that's why there's so much stress that they go through. इसीलिए कोई डिस्ट्रेस कॉल आता है किसी रेजिडेंट का, सॉरी नॉट रेजिडेंट, या पीजी प्रिपरेशन एस्पिरेंट का? ऑन अ डेली बेसिस, अच्छा। बिकॉज देखो, जब हम MBBS में एग्जाम्स देते, आपको लगे एग्जाम्स हम्म, तो हम बचपन से देते आ रहे हैं, बट तब आप दोस्तों के साथ दे रहे हो, है ना, सब साथ में पढ़ हाँ रहे हैं सही बात MBBS है, और में, टॉप नहीं करना है, और टॉप नहीं करना, पास करना पास है, होना है। राइट, एंड योर लाइफ डजंट डिपेंड ऑन इट। यहाँ पे तो ये है ना कि अब ब्रांच नहीं मिलेगी तो आगे क्या करेंगे, एक और ड्रॉप लेंगे, देयर इज सो मच प्रेशर ऑन योर हेड बिकॉज यू आर नॉट अर्निंग एनीथिंग, एंड यू आर ऑफ एन एज वेयर मोस्ट ऑफ योर कलीग्स आर अर्निंग मनी, उनको पैकेजेस एब्सोल्युटली। मिल रहे हैं, हम एंट्रेंस क्रैक कर रहे हैं। सो हाँ। इट इज़ वेरी स्ट्रेसफुल, काफ़ी आपके पास फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ऊपर से एग्ज़ाम क्रैक करना है, सो मच कॉम्पिटिशन, so very distressing, and you are doing this alone. Most of the students take a drop after internship, go back home and study, so that is a very different journey. It's not the same as preparing for NEET UG कि आप 11th 12th में घर पे एक ड्रॉप ले लिया और पढ़ रहे हो, आप बच्चे नहीं हो, right? So सही they are में। at this very difficult age where they are neither a child nor an adult, and बीच में है, and responsibilities आ गई है, but nothing to do, so that's why students are very very depressed at this point. It's very isolating. There's a lot of anxiety. So that's my additional job. It's not just to teach 19 subjects. In हाँ fact, what is more important is to be there and constantly tell them that it's going to be okay. Take it one day at a time. मुझे हर डेली बेसिस पे उनको बच्चों की तरह ही संभालना पड़ता है. Like I have to treat Zara. Actually मैं ना एक पेशेंट इंसान नहीं हूँ. I am very impatient, and Ravi will vouch for it. He knows ओके। how impatient I get. But with this, I have learned so much patience, like through Zara and through my students, कि no, you have to treat them like kids because they are very fragile, है ना, वो fragile stage में है, even though they are grown ups. So you have to deal with them very patiently कि ठीक है, baby steps, अभी ये कर लो आज का दिन, tomorrow we'll do this, so that's what you have to do. You have to break down the seemingly very daunting journey into baby steps, and yeah, so it is So not as easy as it एब्सोल्युटली, looks. कभी ऐसा लगा है कि किसी स्टूडेंट को मे बी मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत है, Yeah. साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है? Yeah. कभी ऐसा लगा? हैव यू रेफर्ड एनी स्टूडेंट टू? A lot of times, अच्छा। and now the students are equipped enough to even identify issues that they are going through themselves, right? A lot of students Okay. can diagnose and okay, I'm this is depression, this is anxiety, so what is the difference between just taking exam pressure versus generalized anxiety disorder, right? So वो identify करना पड़ता है कभी कभी, and we do these offline sessions, हम boot camp करते हैं, कई बार students को panic attack हो जाता है literally अच्छा। कि मैम I can't breathe, मुझे इतना स्ट्रेस हो रहा है, मुझे वो रोने लग जाते, दे टॉक टू मी एंड दे जस्ट कांट एक्सप्रेस, दे जस्ट क्राई, सो इतना प्रेशर होता है स्टूडेंट्स का. सो इसीलिए हम विद्या जीवन का जो एनवायरनमेंट है हमारा, जो ऑफलाइन सेंटर, वी कीप इट वेरी वेरी पॉजिटिव. और देर आर स्टूडेंट्स लाइक अपूर सर तो अपूर सर पॉजिटिविटी है, के एपिटोम एब्सोल्युटली है। अपूर सर है, रवि है, द सपोर्ट स्टाफ देयर, तो वहाँ एक ऑरा ही अलग है कि यू पुश ईच अदर. वहाँ पे सारे लोग एग्जाम दे रहे हैं, देयर आर अराउंड 1000 पीपल इन द कैंपस, ऑल ऑफ यू आर इन द सेम बोट. सो लेट्स टेक एडवांटेज ऑफ दैट एंड सपोर्ट ईच अदर, है ना. तुम एक दूसरे से compete कर रहे हो, अलग है, पर सबको एक एक सीट चाहिए ना इन दी एंड. सो हेल्प ईच अदर थ्रू इट. सो दैट्स व्हाट वी ट्राई एंड डू, एंड वेरेवर रिक्वायर्ड, ऑब्वियसली जहाँ पे साइकियाट्रिक हेल्प चाहिए, स्पेशलिस्ट हेल्प चाहिए, वी डू रेफर. वेरेवर वी कैन मैनेज आवर सेल्स, वेरेवर काउंसलिंग इज इनफ, वी डू दैट. So almost on a daily basis, I have to talk to students who are going through something. Most of the times it's controllable through advice and words, but a lot of times it may not be when it's एंड कभी किसी स्टूडेंट ने बोला है कि आई जस्ट डोंट वांट टू कंटिन्यू, लाइक आई वांट टू ड्रॉप आउट, या फिर आई वांट टू गो टू यूएस में भी, या जर्मनी, यूके, एंड आई जस्ट डोंट वांट टू गिव दिस एग्जाम, बट फिर क्या करते हो? हाउ डू यू See, there are many options, right? And it is worth exploring. अगर आपको ये नहीं लग रहा है, ये मेरे लिए right fit नहीं, I don't see myself doing a residency. It's not about the exam. एग्जाम तो क्लियर हो जाएगा, उसके डर से मत भागो. बट अगर रेसिडेंसी नहीं करना है इंडिया में, देन ऑब्वियसली यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस एंड यू शुड एक्सप्लोर देम, है ना. यू कांट जस्ट बी कि यही एक ही रास्ता, यही चल पड़े तो अब चल ही पड़े, तो ऐसा नहीं हो सकता. सो यू हैव टू ऑब्वियसली टेक डिफरेंट ऑप्शंस इनटू अकाउंट इफ यू डोंट सी योरसेल्फ doing a residency, but if it's just the exam,
हो जाएगा, you just have to hold on, but obviously if you've reached a point, you've given, more than one attempts, नहीं हो पा रहा, I can't bear the pressure, there are many options, this is not the only thing. So क्या क्या options बताते हो? You can go to US, right? Again, that's हम्म not very easy in today's day and हाँ age, क्योंकि हाँ visa के absolutely. बहुत issues हैं. Then, you can do PLAB, go to UK, but हम्म, वो भी डिफिकल्ट जर्नी, आर्डुअस जर्नी है, हाँ राइट? रोजी इट्स पाथ तो नॉट कहीं भी नहीं इजी है. है ना, हाँ बोल हाँ. दिया यूके चले जाओ, इट्स नॉट कि कल उठ के चले गए. हम्म. अगेन मल्टीपल एग्जाम्स आर इन्वॉल्व. many students go for UPSC, again multiple things. फिर UPSC का CMS मेडिकल काउंटर पार्ट भी होता है, where you can do a medical officer job. So काफी बच्चे मेडिकल ऑफिसर का जॉब करते हैं, साथ साथ they are preparing, so they are earning At least simultaneously. something is better Yeah, than nothing. yeah, so they are earning and they are studying simultaneous. काफी states में उसका कुछ advantage भी मिलता है, they get advantage in terms of their marks also. So many students do that. Lateral आपकी skill पे है ना, that is completely your calling, how what you can do laterally. So don't be scared. मतलब अगर कोई भी देख रहा है, you don't be scared of pursuing something which you feel is true to your heart. So आपको अपना calling choose करना है, be true to yourself, and leap of faith तो सबको लेना पड़ता है. When I left AIMS SRship, मुझे तो सबने बोला था कि तुम पागल हो, तुम क्या करोगे आगे जाके, तुम क्यों AIMS की फैकल्टी सीट छोड़ना चाहते हो. लाइक नहीं, एक लीप ऑफ फेथ तो लेना पड़ेगा ना, बिकॉज यू कांट टीच व्हेन यू आर एट एम्स. सो आई हैड टू डिसाइड, अगर आप एम्स में हो तो आप उस टाइम पे एक्चुअली टीचिंग नहीं कर सकते हो. सो आई हैड टू टेक दैट कॉल दैट इट्स आइदर दिस और दैट. सो ये मेरे साथ भी हुआ था 2019 में ना, एम्स की फैकल्टी की सीट निकली. या I had finished my SRship, I had gone back home, and I was planning to go to Germany. मेरा fixed था, I don't know why, fixated था मुझे जर्मनी Yeah. जाना है, shoulder surgeon बनना है. And then the exam seat came. I got calls from my seniors who were faculty names. From my family, I had so much pressure. I was under so much pressure. और फिर मैं बीकानेर से गया इंटरव्यू देने, बट आई नेवर वेंट टू द इंटरव्यू. आई जस्ट डिडंट गो टू द इंटरव्यू बिकॉज मेरा क्लियर था मुझे नहीं जाना है, मुझे इंडिया से बाहर जाना है. Yeah. एंड आई लाइड टू माई पेरेंट्स कि मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ. देयर वाज सम कैंडिडेट जिसकी सिफारिश बहुत बड़ी थी, एंड दोज काइंड ऑफ थिंग्स. आई मेड अप थिंग्स एंड आई सेड मेरा नहीं हुआ, एंड आई हैव ओनली वन ऑप्शन लेफ्ट टू गो टू जर्मनी. Okay. सो प्रेशर तो आई थिंक Yeah. सबके ऊपर Leap होता है, of faith आपको लेना है. चांसेस Yeah. तो लेने पड़ते हैं. I hope your parents knew about this before this हाँ, podcast. नहीं वो इतना नहीं इसके थ्रू तो नहीं पता चलेगा ना उनको ये. आई थिंक अब फर्क नहीं पड़ेगा. Yeah, everything has turned out well. Yes, yes. So, what were the real challenging times for Zainab? Hmm. Like we are talking about challenges for students and Yeah, everything. yeah. सबसे बड़ा चैलेंज या लो Hmm. कब आया लाइफ में, और फिर कैसे उसको ओवरकम किया? I think that phase where I talked about, was the toughest phase of my life, where I lost my dad, found out I was having Zara, multiple issues, career change. Everything happened, in one moment. Even after Zara's delivery, that one moment also was very difficult because her neonatal period was very tough. Us time pe na, as a mother, I mean, mothers would relate that your brain does not function normally just immediately postpartum. I was so clueless that what am I going to do with life, because I was not practicing. I was teaching, so teaching was going fairly well, but it was still something which I was doing part-time at that point of time. So I was very confused and I didn't know how to handle my life. I was a new mother, I didn't know what to do, so that was, I believe, very, very tough, and I didn't know how to handle Zara's health, which was going bad in her neonatal phase. I think that was the lowest moment of my life, where I was just clueless, literally. I had to ask Ravi ki ab main next kya karu, and he had to be there around me. So I guess that was one time which was very, very tough, and I wasn't myself at that point. But yeah, things started looking up. So us time pe aapko support chahiye. I am very grateful that I had a support system around me. My mother was there, my brother was there, Ravi was there, his parents were there. So support system chahiye hota hai aapko life mein. And bad times eventually pass. Yeah, and yeah, it did get better. Everything started looking up. But yeah, so that
was one low moment. अपार्ट फ्रॉम दैट छोटी छोटी चीज़ें चलती रहती है, यू नो, वी वर डिस्कसिंग कि ट्रोलिंग वगैरह होता रहता है, तो वो तो अब आदत पड़ गई है, यू नो। हाँ, हाँ, तो वो मतलब कितना किस लेवल पे होता है? इंटरनेट पे होता है या ऐसे हाँ, लाइक ऑफलाइन भी ट्रोल कर सो जाते हैं? स्टूडेंट्स ज़्यादा नहीं करते, ज़्यादा बाकी कॉम्पिटिटर्स ज़्यादा करते हैं, यू अच्छा। नो। सो दे सी आई एम वन पर्सन हु इज हुँ, टीचिंग ऑल 19 subjects, हुँ, हुँ, हुँ। right? And I am doing fairly well, and यस, that यस, is आई a एम श्योर। threat to many people, right? So that's a threat to many organizations. So हुँ, they have a very easy punching bag here, that how can one person teach everything? हुँ। My defense to that is, but one person is also giving the exam, right? For all 19 subjects, they're सही also बात है। learning. So I'm हाँ। also learning at the same level as students, maybe as a senior, and I'm teaching it to them, right? I'm not claiming हुँ। to be a faculty or expert in all 19 subjects, but a student does not have to be an expert in all 19 हाँ, subjects, हाँ, right? so एब्सोल्युटली। so that's what it is. So I'm coming to the level of the students and teaching them in ways that they can understand, and I know the strengths and weaknesses and the hardships that they go through, so that's why they relate to me very well. So that's one thing. The second thing that I face a lot of criticism for is my course is called बुरी तरह रटो, जिसका मीनिंग है कि हाँ। तुम रटवा रहे हो चीजें. ओह! So दैट when वे this course या। came, you know, I had a lot of backlash कि रटने से तो मेडिकल एंट्रेंस क्रैक नहीं होगी, एंड आप कैसे डॉक्टर हुँ। बना रहे हो. बट इट्स नॉट अबाउट दैट. यू नो हाउ BTR केम इनटू बीइंग? जब हम एम्स में अंडरग्रेड थे तो हमारे सीनियर्स ना बुक मार्क करते थे, जैसे हाँ, हर हाँ, जगह बुक हाँ। मार्क होती है. बिल्कुल, तो बिल्कुल। एम्स में जब बुक मार्क होती थी तो जो एकदम एक रात पहले पढ़ना है उसको मार्क करते थे BTR, बुरी तरह रटो. कि दैट ये वे। जैसे लिखते ना इंपॉर्टेंट, अल्ट्रा हाँ, हाँ, इंपॉर्टेंट, हाँ। BTR, अल्ट्रा BTR, उसका एक पूरा हायरार्की होता था. So ओह! that was BTR. So you know that is what the course was, as a legacy of you know AIMS, कि you know I हाँ, am your senior and मैं इंटरेस्टिंग। आपका सिलेबस मार्क कर रही हूँ कि ये इतना इंपॉर्टेंट स्टफ है, पहले इतना कर लो, ये है ना. कंडेंस्ड पार्ट कर लो, या सी उसके बाद यू व्हेन गो। आई टेल यू हाँ। 19 सब्जेक्ट्स इतना है, आप डर जाओगे, अरे शुरू कहाँ से करें हुँ। मैम. सो आई टेल यू ओके, पहले इतना कर लेते हैं, ये BTR है, राइट? सो दैट इज हाउ इट केम इनटू बीइंग. इट इन नो वे मींस कि चलो हम रट लेते हैं सब कुछ, ऐसे तो डॉक्टर्स नहीं बनेंगे, राइट? हमें समझना ही एब्सोल्युटली। पड़ेगा. सो या, सो दैट इज समथिंग. सो मुझे काफी एक्सप्लेनेशन देना पड़ा, जैसे आपको दिया तो आप समझ गए. हुँ। जस्ट लाइक दैट, इट वाज अ प्रोसेस ऑफ यू नो 1 year 2 years where students slowly accepted, and you know. so राइट। so I also want to ask you on that note, you know, that you are starting your own setup called Step Up Joints. So like what made you take that leap of faith कि मुझे कुछ अपना करना है? बहुत टाइम से आफ्टर वर्किंग इन कॉर्पोरेट, वर्किंग आउटसाइड एंड वर्क कमिंग फ्रॉम एम्स, देयर आर अ फ्यू थिंग्स जो मुझे लगा फ्रेगमेंटेड है ऑर्थोपेडिक केयर में. स्पेसिफिकली ऑर्थोपेडिक्स एंड फिजियो एंड रिहैब पार्ट बहुत ही डिसजॉइंटेड है. जैसे हम पेशेंट देखते हैं, हम बोलते हैं आप फिजियो करा लेना, फिर वो फिजियो करा लेता है पेशेंट, और 1 महीने बाद आता है आइदर विद कॉम्प्लिकेशंस और विद ग्रेट रिजल्ट्स. आइदर वेज हमें समझ नहीं आता है व्हाट टू डू नाउ. स्पेशली अगर रिजल्ट्स परफेक्ट नहीं है, देन वी डोंट नो वेदर टू रिपीट दिस or whether to ask them to do something else. And not just after surgery, even the preventive part. So there are many pain points which I could identify. One of them was also efficiency. Other day, a person came up to me and said कि यार आप डॉक्टर साहब, मैं आया जब तो 3 घंटे पहले अपॉइंटमेंट में वेट हुआ, फिर फिजियोथेरेपी में वेट हुआ, फिर एक्सरे के लिए वेट हुआ, उसके बाद अब फार्मेसी पे वेट हुआ है, तो मेरा पूरा दिन एग्जॉस्ट हो गया है, माई लीव इज़ गॉन. It is not about the money. I'm willing to pay more money, but where is the efficiency in your system? So these things were in my mind, and then I met two great persons, Dr. Aditya Jain, who was also a resident with me in AIMS, and Dr. Pulak Vatse, who was my MBBS, not co-batchmate, but he did his MBBS from MAMC, and then he was also a resident in AIMS. तो हम लोग बैठे and we decided कि we have to make a center which is single speciality and is not catering everything the patient needs, and which has physiotherapy, which has mental issues, which has nutritionist, which has orthopedicians, everything under one roof, targeted to a single specialty, and not only for patients, also for persons. Like it has to be preventive orthopedics, it has to be, and if somebody needs a surgery or an intervention, then we should be able to provide it, as we have been trained from AIMS and outside India. So we assume that we are one of the brightest and the best.
and we are able to provide the excellent care. और इसमें ना एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है, रिलेटिव्स ने स्पेसिफिकली, जब उनको किसी ने सर्जरी एडवाइस करी है, देन दे कम टू एंड यू एंड आस्क के सर्जरी करानी या नहीं करानी. सो दिस इज काइंड ऑफ, वो एक ऑनेस्ट ओपिनियन चाह रहे हैं, Yeah. एंड दे हैव दिस इन देयर माइंड, मे बी ये डॉक्टर पैसे के लिए तो नहीं कर रहा है, या इज देयर सम थिंग इन्वॉल्व इन अ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल. So I would like to say that we are from AIMS. We are a team which have worked in government hospital for a long time, and we will be giving honest opinions under this roof of Step Up Joints. So this is our principal core of our beliefs. Baki, let's see how it works. Amazing, and that's what we are talking about. Na, एक चीज करो, but do it. Give it your 100%. हाँ. So that's what you are focused on. Just one thing, but you give 100%. Exactly. And as a team, I think we will be available. And I am a shoulder surgeon, but we have a team which can cater to almost every specialty. 3 of us together can do everything about orthopedics in one roof. So let's see how it goes. And thank you for mentioning Yeah, it. all the very best to you. Thank you. Thank you. So this question I have asked a lot of legends also on this Yeah. podcast. कि आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो क्या व्हेन यू इंटरेक्ट विद अ स्टूडेंट और अ रेजिडेंट दैट दिस पर्सन हैज सम फायर इन कि ही विल बी सक्सेसफुल और ही विल क्रैक द एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि नहीं, ये एवरेज हैं, सो इनको ऐसे ही डील करना है. लाइक डू यू रिकॉग्नाइज दिस? सी, मेरे लिए ना सक्सेस का डेफिनेशन नीट पीजी का एंट्रेंस का रैंक नहीं होता. अगर मेरा वो सक्सेस का डेफिनेशन हो गया है, आई एम नॉट डूइंग अ गुड जॉब एज अ टीचर. अच्छा. अगर मैंने पहले ही वो डिस्क्रिमिनेट कर दिया कि ये बच्चा रैंक लाएगा, ये रैंक नहीं लाएगा. मेरा जॉब क्या है जो मैं आइडेंटिफाई करती हूँ इज दैट किसी एक इंसान जिसको पहले सीट नहीं मिलने वाली थी, इफ़ आई कम इन टू देयर लाइव्स, आई कैन इनेबल देम टू गेट अ सीट, राइट. मेरा एम एज अ टीचर in this NEET PG phase is to get everybody a seat that they want. It's not a rank. It's not about a rank, right? Why are we defining? And that's what I keep telling the students. Stop defining yourself by the rank that you are getting. ये तो लाइफ का एक पार्ट है ना. एग्जाम क्लियर करो, आगे बढ़ो. इट्स अ गेटवे, राइट. अल्टीमेटली आप क्या रैंक हो, कौन पेशेंट आपको पूछता है कि डॉक्टर नमन आपका रैंक क्या था? नहीं, राइट. मैं खुद भी भूल जाता हूँ कई बार क्या था. So that's what It's it become is. so immaterial. So that's so important, right? हाँ. कि अभी आप या इस स्टेज पे हो अपनी लाइफ में, अपने रैंक के बलबूते पे नहीं हो, आप अपनी टैलेंट के बलबूते पे हो, एंड योर पैशन एंड द मोटिवेशन दैट यू हैव फॉर योर सेल्फ. आई वॉन्ट टू डू वेल इन लाइफ. दैट इज वॉट मैटर्स. इट्स नॉट योर रैंक. सो ये सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है. इफ आई से कि नहीं तुम एवरेज हो और तुम ब्राइट हो, तो आई एम ऑलरेडी अ बैड टीचर, राइट. आई कांट डू दैट. सो मेरा वो पर्पज ही नहीं है. मेरा पर्पज है तुम्हारा जो अभी बेसलाइन है, लेट्स क्लाइंब अप फ्रॉम देयर. किसी का बेसलाइन यहाँ है, किसी का बेसलाइन यहाँ है, राइट. वी क्लाइंब अप फ्रॉम देयर एंड वी रीच योर बेस्ट पोटेंशियल. सो दैट इज माई एम. इट इज नॉट टू सी कि किस में फायर है या कौन आगे बढ़ेगा, किसका रैंक आएगा. आई डोंट केयर किसका रैंक आएगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता. मुझे ये फर्क पड़ता है कि तुम्हारा ओके, तुम्हें सीट मिल गई, शायद पहले नहीं मिलती, अब मिल गई. सो दैट इज माई ट्रू सक्सेस स्टोरी, राइट. कि मेरा हर एक स्टूडेंट, उसको एक सीट मिल रही है, वो लाइफ में आगे बढ़ रहा है. दैट्स इट. रैंक फर्क नहीं पड़ता, सो एंड यू कैन ऑलवेज क्लाइम लेटर. Yeah. वो एक तो प्रोफेशन ही जब चेंज हो जाएगा आफ्टर रैंक, Yeah. आफ्टर यू गेट सम ब्रांच, तो उस प्रोफेशन में क्लाइम करना, एंड देन यू हैव, एंड इट्स अ मैराथन. इट्स नॉट अ स्प्रिंट कि फर्स्ट ईयर में जिसने किया वो बेस्ट है या पीजी में किया. यू स्टिल हैव रेजिडेंसी, यू स्टिल हैव years after that to become a real good clinician. Absolutely. But and what is the guarantee कि आपका रैंक अच्छा है तो हाँ, आप लाइफ में अच्छा सही ही बात है. करोगे? There is no guarantee, so आपने अगर रेडियोलॉजी ले ली रैंक 1 लेके, उसमें क्या गारंटी है कि अच्छा अब आप सक्सेसफुल हो, स्टैम्प लग गया. आपने एनाटॉमी ले ली, स्टैम्प लग गया, आप सक्सेसफुल नहीं हो. हु हैज मेड ऑल ऑफ दीज बाउंड्रीज, राइट. यू हैव टू एक्सेल इन वॉट एवर ब्रांच दैट यू टेक. अल्टीमेटली आपने एक ब्रांच पिक करी, अब तो आपकी लाइफ शुरू हुई है, अब आपको उस ब्रांच में एक्सेल करना है. वाई आर यू कंपीटिंग विद द रेडियोलॉजिस्ट, राइट. सो यू हैव टू सी कि मैं एनाटॉमी अगर मैंने लिया है, हाउ डू आई डू द बेस्ट जॉब एज दैट पर्टिकुलर, इन दैट पर्टिकुलर branch. And there are so many options in every different field, we just have to explore and excel. हम इस स्टेज में पहुंच गए हैं as MD and MS, आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो. You're already ahead of the cohort. You just have to believe in that, and rank, branch फर्क नहीं पड़ता, आपको उसमें excel करना है, and that's exactly. In fact, there is a famous saying कि even if you are a cobbler,
try to be the best cobbler in town, Yeah. so that everybody wants to get their shoes mended from you. Yeah. So you have to strive for excellence. पर तुम्हारा रैंक क्या था? मेरा रैंक 1 था वैसे. रैंक 1 I था. was rank 1 when I took up radio. एक ही सीट थी. रेडियो क्यों ली? Okay. So I would be lying if I say कि मुझे ये मेरा चेकलिस्ट था. No. मिल रही थी, अच्छी मानी जाती थी. आई टुक अ लीप ऑफ फेथ कि सब लेते हैं, ले लेते हैं. लिटरली द माइंडसेट वाई पीपल से कि ये नहीं लेना चाहिए. आई टुक इट एग्जैक्टली फॉर दैट माइंडसेट कि सब बोलते हैं रेडियो अच्छी होती है, ले लेते हैं. यू विड बी सरप्राइज टू नो, मुझे पता ही नहीं था डिपार्टमेंट भी कहाँ है. आजकल बच्चे इतने स्मार्ट है, दे सही गो बात टू है. डिफरेंट हॉस्पिटल्स, दे टॉक टू रेसिडेंट्स. मैंने बस ले ली थी कि चलो देखा जाएगा. यू नो, एक सीट है मेरे लिए ही बनाई गई है, लेट्स टेक इट. सो आई वाज ऑल इंडिया रैंक 1. देयर वाज Yes. one unreserved seat in radiology in AIIMS. I was like, this is made for me. I have to take it. I just trusted my instinct on that. On my first day of residency, मैं डिपार्टमेंट ढूंढ रही थी. It was so shameful. मैं एम्स की अंडरग्रेड हूँ, मुझे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट ही नहीं पता. So that is how it was. But yeah, obviously, it was the right decision, and I never regretted it at any point, even a radio क्यों ली, because I knew one thing about me कि मुझे सर्जरी नहीं करनी. That was completely ruled out कि सर्जिकल ब्रांचेस नहीं चाहिए. फिर बच जाता है रेडियो, डर्मा, मेडिसिन. मेडिसिन आई डिडंट वांट टू बी इन्वॉल्व इन पेशेंट मैनेजमेंट सो मच. मुझे थोड़ा सा लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए था. मुझे मेरी नींद बहुत प्यारी है. सो आई थॉट ओके, सो 2 ऑप्शन बच गए, रेडियो, डर्मा. वेरी कंफ्यूजिंग, क्या ले, डर्मा भी अच्छी लग रही, रेडियो भी अच्छी लग रही है. अब नेचर ने मेरे लिए कॉल लिया. देयर वाज 0 Derma unreserved seats in that year. So I was like, great, तो ये तो decision हो गया. So that is how I took up radiology without any intelligence involved. you know. You come from a family of doctors? No, Yeah, you are the first I one. am the first doctor in my family. Okay. And yeah, when I took up radio, they were also very like anti radio कि ये कैसा डॉक्टर है. जैसे काफी लोग जोक भी बनाते हैं कि तुम glorified photographer हो. I don't believe in all of that. काफी लोग बोलते हैं ना रेडियोलॉजिस्ट तो glorified photographers है. But it offers so much flexibility in terms of so much you can do, right? आपको अल्ट्रासाउंड करना है, अल्ट्रासाउंड गाइडेड इंटरवेंशंस कर लो, कोर इंटरवेंशन करना है, इंटरवेंशनल रेडियो कर लो. इट्स कमिंग अप इन सच अ बिग वे. You do cross sectional imaging, there are multiple systems, so it's something where you know the pace of change is so fast. That is what excited me the most कि मैं इसमें बोर नहीं होंगी. You are reporting one thing, you know, आपने एक शोल्डर डिसलोकेशन देख लिया, नेक्स्ट मिनट आप मेटास्टासिस देख रहे हो, नेक्स्ट मिनट आप लिम्फोमा देख रहे हो. इट इज सो इंटरेस्टिंग. इंटरवेंशनल पार्ट भी, मतलब intervention part if you very really want to interesting. get involved in surgical part or Yeah. patient care directly, I think Yes. intervention radiology is an Yeah. answer. Yeah, so that is why I never you know had any doubts that I've you know picked the wrong branch for myself, because I knew that I get bored easily. मैं एक ही चीज बार बार नहीं कर पाऊंगी. So it offered a lot of variety, and I loved to study and you know think and be with my brain rather than with patients. And radio is the perfect branch where you are there, your computer and your scans are there, and you are thinking. Actually, it's we are doctors है ना. जैसे रेडियो consultants. Yes, जैसे रेडियो कॉन्फ्रेंसेज होती थी हमारी, तो रेडियोलॉजिस्ट का काम क्या है? पेशेंट से बात करना नहीं है ज्यादा, आप लोगों को समझाना है कि ये लग रहा है, ये ऐसे होएगा, ये एक्सटेंट है, ट्यूमर मार्जिन्स क्या है, या इन्फेक्शन लग रहा है, नहीं लग रहा है, ऑल दोस थिंग्स. एब्सोल्युटली. सो या दैट इज व्हाट वाज फन अबाउट रेडियोलॉजी, यू नो. सो रेजिडेंसी कैसी रही? Residency was superb. Oh wow. AIIMS residency, Acha. radiology residency is the only residency in India, I think I can claim it, where JRs don't have night duties. Oh wow. हमारी ड्यूटी कैसी होती थी पता है? 9 o'clock तक. उसमें भी हम रोस्टर बनाते थे, हम लड़ते थे कि आज 9 बजे तक, मैं महीने में 4 से ज्यादा नहीं रुक सकती प्लीज. ओके, सो उसमें भी हमारी लड़ाई होती थी. रोस्टर बनता था कायदे से कि कौन 9 बजे तक ड्यूटी करेगा, उसको हम ड्यूटी बोलते थे. सो दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग्स. एंड सीनियर रेजिडेंसी में तो करनी पड़ी. सीनियर रेसिडेंसी, सो सीनियर रेसिडेंसी टफ था. सो दैट मेंट कि वी कांट जस्ट डू 3 years. आवर कोर्स वाज डिजाइन्ड एज अ 6-year कोर्स कि आपको ऐसा शिफ्ट करना है. या सो आवर JR शिप वाज very very good because our focus was on learning, you know.
इवन द फैकल्टी सो ग्रेट, उनका फोकस था कि बस जेआर्स को पढ़ने दो, उनको जितने केस रिपोर्ट करने दो। बाकी कॉलेजेस में होता है कि जेआर्स अल्ट्रासाउंड करते रहेंगे, एसआर्स विल रिपोर्ट द क्रॉस सेक्शनल, यू नो देयर इज दिस अच्छा ट्रायड, अच्छा जेआर्स विल ओके डू नाइट ड्यूटी, एसआर्स विल जस्ट ओवरसी। बट इन एम्स इट इज ऑपोजिट कि जेआर्स को सिर्फ पढ़ाया जाएगा बच्चों की तरह, एंड फिर एसआरशिप में वो काम करेंगे। सो या ऑब्वियसली वी डिड वर्क इन एसआरशिप, सो Absolutely. लोगों का उल्टा कोर्स होता है, हमारा उल्टा हाँ, कोर्स था, सो ऑर्थोपेडिक्स में भी इवेंचुअली ऐसा ही रहा। जेआर्स तो हम्म, स्टूडेंट्स थे हाँ, इंस्टीट्यूट के, वो yes, वर्कर्स नहीं थे। yeah, तो हमारा फोकस था टू बिल्ड सीवी, yeah, रिसर्च एंड टू पूरा वो पेशेंट का पेरी ऑपरेटिव मैनेजमेंट, yeah, प्रिपेयरिंग एंड एवरीथिंग। ऑल्दो इट डिड लीड टू सम काइंड ऑफ यू नो फटीग एंड सैडनेस, बिकॉज हमारे जो पियर्स थे they were doing big surgeries, yeah, और हम लोग सिर्फ पेशेंट मैनेजमेंट कर रहे थे और सीवी बना रहे थे। yeah. बट वो एसआरशिप में पूरा It रिवर्स हो जाता it है। works out. ये काफी बच्चों हाँ का, मतलब आई वांट टू आस्क यू दैट आल्सो, काफी बच्चों का कंसर्न होता है दैट व्हेन वी पिक अप अ सर्जिकल ब्रांच इन अ सेंट्रल इंस्टीट्यूट, ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे कटिंग आपको कम मिलेगी, एग्जैक्टली। राइट? एंड दैट इज ट्रू टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट डू यू थिंक इट मैटर्स इन द लॉन्ग रन, या इट ऑल इक्वल्स आउट? ये एक्चुअली क्वेश्चन मुझसे बहुत लोगों ने पूछा है अबाउट कटिंग, तो मेरा एक ही आंसर है, दिस सर्जिकल जर्नी इज अ वेरी लॉन्ग एंड स्लो लर्निंग कर्व। Right now, after 13 years in orthopedics, I look back and I say कि maybe 8 years या 9 years मुझे लगे सीखने में। Yeah. And I think उसके बाद जो भी hands on मिला, that is where the learning really started. शुरुआत में जो रेजिडेंसी की ट्रेनिंग है, so hands on is not just the operating part. Yeah. You have to know the right indication. You have to be prepared for the complications. You have to see your seniors कि वो कैसे हैंडल करते हैं केसेस को, क्या करेक्ट स्टेप्स हैं, एंड द प्रोटोकॉल्स आफ्टर सर्जरी। अब ऑपरेशन के बाद हाइपोकेलीमिया हो गया, एएफ में चला गया पेशेंट, तब क्या करना है? लाइक यू कैन नॉट जस्ट ऑपरेट एनीबडी ऑफ एनी एज। What if a pregnant lady comes up with a fracture? Yeah. You can't just do C-arm shots inside the surgery. So everything comprises of hands-on training. Yeah. And the cutting part comes naturally over a period of time. And once you reach the upward slope of the curve, so there is a lag phase and then there is a log phase, like in every other curve. Yeah. So once you reach the log phase, you can do any surgery. Yeah. For example, right now, even if I specialize in shoulder, I can operate on any bone, any joint. Yeah. I just have to read the steps once if it has Yeah. been long. तो अब आप सर्जरी कर सकते हो, बिकॉज एक सर्जन का जो लर्निंग कर्व होता है ना, वो लॉग फेज में आ गया। Yeah. तो कटिंग के पीछे नहीं भागना है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग के पीछे भागना है। एंड दिस क्वेश्चन ऑल्सो कम्स अप अ लॉट, राइट, कि ब्रांच लें कि कॉलेज लें। तो इसका मेरा आंसर है, अगर आप सर्जिकल ब्रांच चाहते हो तो कॉलेज प्रेफर करो, बिकॉज द सर्जिकल ट्रेनिंग इज नॉट अबाउट कटिंग। एंड इफ यू आर थिंकिंग ऑफ अ मेडिकल ब्रांच, तो इट्स ओके, because you can always overcome this with extra studies, extra CMEs, workshops. But surgical training ka jo protocol management hai and everything, that starts from a big institute, and that really makes your base. And to add on to it, sorry, it's your podcast and I'm blabbering out. No. To add on to it, I asked this question to my professor when I was a fellow in Germany, कि sir आप choose कैसे करते हो fellow? तो कहते we don't look at the CV, we only look whether it is a great institute, big institute in which he has worked, and what stage of learning the candidate is in. अगर वो 10 साल से practice कर रहा है, तो I don't take him as fellow, because then I'll have to make him unlearn what he has learned, and then teach him again. So that wastes my 6 months. I don't get any benefit out of it. So fellowships के लिए जल्दी apply करना और institution की जो basic training है ना, उस पे focus करना है. So, what is your take on branch versus college? I think a branch will definitely win. Like, if you want to do something and you're very passionate about it, don't compromise on it just because better college किसी और branch में मिल जाएगा. That's true. Because then you will leave it and then it all becomes the same. Vicious cycle बन जाएगी, क्योंकि spiral एक down बार वो मन में है कि नहीं मुझे मेडिसिन करनी है ना, आपने कुछ कॉम्प्रोमाइज करके ले लिया, अब फिर वो हमेशा आपके दिमाग में वो आएगा. इन एवरी बैड डे ऑफ रेसिडेंसी एंड बैड डेज इन रेसिडेंसी आर वेरी कॉमन. आप उसी पे ब्लेम डालोगे कि मैंने वो ले लिया होता तो लाइफ बेटर होती, विच इज फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट ट्रू. लाइफ तब भी खराब ही होती, बट
at least you keep हाँ, blaming, you know, you सही keep बात है। going back to that. So at least pick the branch that you've always been passionate about. काफ़ी बच्चे होते हैं कि मैम मुझे किसी भी चीज़ का पैशन नहीं है, तो फिर you know you definitely rate a college over you know the branches of your preference. Narrow down a list at least, you know. My algorithm which I tell students is पहले तो surgical medicine सोच लो हाँ, कि ये clear surgical करो। में जाना है कि नहीं, and that I think is very instinctive. All of us by the end of internship know कि surgical करनी है कि नहीं करनी. So that's the first triage. After that, then be ready to you know go here and there depending on your rank कि surgery करनी है, general surgery नहीं मिल रही, okay, what are the other options? You can do ENT, you can do ophthalm, these are more complete branches also. You can do orthopedics. So there are multiple subsets. Then you can switch, right? And you won't really regret it too much. अगर आपको general surgery करनी थी but आपने कोई और surgical branch ले ली, अगर medicine करनी थी, derma radio करनी थी, psychic करनी थी, I think those people are like pretty fixated and they know what they want to do. So yeah, I mean that's the triage. But yeah, definitely choose the branch that you want, and you know obviously surgical institute as you said कि हाँ, और ये college सब उसी matters. के लिए जिसको क्लैरिटी नहीं है। Yeah, जिसको absolutely. क्लैरिटी है उसको तो क्लैरिटी है, फिर तो कोई Yeah. क्वेश्चन ही नहीं बनता है। Absolutely. And हाँ। yeah, just to, you know, add on to what you said, to everybody, don't be in a hurry to learn everything. I think हाँ। surgery में बहुत होता है कि जल्दी जल्दी मुझे OT में जाना है. हाँ। Don't be in a hurry, don't be impatient, क्योंकि as you said, it's a 12-year curve, it's a journey, and बिल्कुल। life में आपको अब यही करना है. This is the rest of your life. So don't be in a hurry to learn everything. हर एक चीज़ जो कर रहे हो वो valuable है. Pre-op कर रहे हो, post-op कर रहे हो, उतना ही valuable है. इनफैक्ट अभी रिसेंटली मेरी लर्निंग जो मुझे लगता है जो मैंने गेन किया वो था हाउ टू टॉक टू द पेशेंट्स हु आर Yeah. कमिंग टू अ प्राइवेट हॉस्पिटल। Yeah. ये पूरा आई थिंक इट टुक मी 6 months टू एक्चुअली लर्न Yeah. फ्रॉम द ग्रेड्स कि भाई कैसे इनसे बात करनी है, बिकॉज द माइंड सेट ऑफ अ गवर्नमेंट Yeah. हॉस्पिटल पेशेंट, ऑफ अ पेशेंट इन जर्मनी is Yeah. and of a patient who's coming to Apollo Hospital or Fortis Yeah. Hospital is completely different. Yeah. Sometimes it's just a second opinion they want, Yeah. and it takes time to learn that. So the Absolutely. skills keep on coming. You have to get updated. Absolutely. And it's such a shame, right, कि हमें ये रेसिडेंसी में नहीं सिखाया हाँ. जाता, which is such a core skill of a doctor is communication, being of a passionate. teacher, of Yes, any profession, absolutely. communication is the key. Networking is the key. वो ही Yeah. नहीं सिखाते वो हमें। नहीं सिखाते. Absolutely. And networking, you know, we are so shy as doctors, हाँ. and इसीलिए हमें लगता है कि ठीक है, हमें हमसे एग्जाम दिलवा दो, हाँ. but I can't, you know, talk to people and ask Absolutely. for a job. And you have to learn how to talk to people, how to make connections, and you know, just your colleagues. That's what I tell my students in offline classes also, कि तुम एक दूसरे का ही तो कोहॉर्ट हो, तुम ही तो एक दूसरे को आगे जाके रेफर करोगे, तो अभी दोस्त नहीं बनाओगे तो आगे फिर कमीशन दोगे, इससे अच्छा अभी दोस्त बनाओ, right? So why don't you make friends with your own cohort and be connected, है ना? As doctors I think we are all very antisocial and we definitely are. कॉन्फ्रेंस में जाके भी चुपचाप खड़े रहते बिल्कुल, हैं। हम पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं क्लास में. हाँ. So that's what we do, right? So you have to communicate and talk to people, create networks, and that is I think one very very important determinant of how successful you will be, you know. And I think that's something which is very underrated. That and research. I think research in India very very underrated, and you know people don't want to do it because there's no money in it, there's no fame in it. Absolutely. So yeah, we have not glorified it as much as you know other countries have. But at least in residency, I think you should you know look to publish a lot of papers, because that's the best time when you can actually do original research. उसके बाद आपको time पता नहीं कितना मिलेगा. So yeah, you have to write at least, शुरू करो review article से, case report से, then do original research, do your thesis well. मैं students को बोलती हूँ thesis मत लिखो, काफ़ी बच्चे लिखवाते हैं बाहर से. Don't do all that, you know. So do your own thesis, publish करो उसको, and with AI coming in, अब review article की कोई value नहीं है, right? Like सही बात it है। will write the review article in you know 1 minute. Why do you want to publish that? So they will only publish new articles now. So look to do your thesis well, and you know Indian patients की value बहुत है बाहर. You know how many of the Indian original research gets published, because हमारे पास सबसे ज़्यादा patient pool है. So take you know advantage of Absolutely. that fact. So yeah. And one more thing Dr. Harsh Mahajan said on this podcast is public speaking. Yeah. A public speaking skill, if you can develop any of the residents, Yeah. he said कि बहुत बड़ा factor है in determining a successful doctor Yeah. and an average doctor.
True, absolutely, and you know I can relate to it myself because I am very shy. I Really? हाँ मतलब अभी अच्छा। I don't know कितना लग रहा है, अब I become हाँ। better, but yeah पहले मुझे स्टेज पे बोलने में बहुत डर लगता था, you know I would just say कि I will just make excuses कि मैं नहीं जा सकती स्टेज पे स्पीच देने, others are staring at me, I can't speak, I will just Wow. choke, you know. So till very recently, you know, I struggle just giving a speech like that. As a informally I can talk, you know, I can हाँ। teach somehow, even in my offline sessions, when I'm standing and giving a speech versus when I'm sitting and teaching, they are two different people, right? I am so अच्छा। comfortable just sitting and teaching. I'm a completely different person that way. The way I Okay. speak is very different compared to when I have to just speak on a stage, you know. So yeah, I don't think I'm very good at it. So yeah, it is important, but with time you get better, you know. हाँ, At least now practice I'm makes it trying to perfect. hide. Yeah. I'm good at hiding now कि मुझे डर लग रहा है, you know. So you become good at least faking हाँ। faking it that मुझे डर लग रहा है. So yeah, I think Nice. practice, just take any opportunity that comes your Hmm. way, you know. एक advice जो हम सारे young doctors को दे सकते हैं, कोई भी opportunity आ रही है ना, don't let it pass by in the initial, at least from your 25-year to 35-year 10-year journey. I think जो भी opportunity आ रहा है, explore it, and क्या हो जाएगा, ज़्यादा ज़्यादा you will fail, it's okay, you will learn something out of it, right? There are Absolutely. no mistakes, there are only lessons, हाँ, right? So you keep कॉन्फ्रेंसेस भी learning. सारी अटेंड करो जितनी हो Yeah, सकती हैं, जस्ट absolutely. अटेंड ऑल द कॉन्फ्रेंसेस। Yeah, इनफैक्ट एक टिप मैं देता हूँ कुछ स्टूडेंट्स को जो फेलोशिप्स के लिए मुझसे पूछते हैं, yeah. कॉन्फ्रेंस में जाओ, जो प्रोफेसर पसंद है उसका लेक्चर सुनो, उसके साथ सेल्फी लो, Yeah. एंड द नेक्स्ट टाइम you approach him with an Yeah, email, show. attach that selfie and tell him that how you enjoyed listening to him, Yeah. and then apply for the fellowship, and that way, that is the only way to jump ahead of the queue. Yeah. अदरवाइज बहुत सारे लोग फेलोशिप्स के लिए आगे पीछे घूम रहे होंगे. Yeah. सो गो टू कॉन्फ्रेंसेस, ट्राई Yeah. टू स्पीक, टेक सेल्फीज विद बिग शॉट्स Yeah. एंड यूज देम. Yeah, that's such a nice tip because you're personalizing it ना, सबको वही हाँ, चाहिए हाँ, कि हाँ. आप स्टैंडर्ड AI टेम्पलेट से लिख हाँ, रहे हो हाँ, या हाँ, फिर you're वो चलता नहीं personalizing. अब. So use personalization in everything. अब AI के आते अब ये हो गया है कि जितना आप चीज़ों को खुद करोगे, personalize करोगे, उतना आप stand out करोगे. एब्सोल्युटली. Yeah. अच्छा, एक टिप जो एक फर्स्ट ईयर रेजिडेंट है जिसने सर्जरी उठा ली है या मेडिसिन उठा ली है, एंड ही इज रियली स्ट्रगलिंग, ही और शी, और रात में 2 बजे उसको प्रोबेबली ये पॉडकास्ट देख रहा है वो, आई डोंट नो व्हाई, इंस्टेड ऑफ स्लीपिंग, Yeah. बट व्हाट टिप वुड यू लाइक टू गिव हिम और हर? I think just hold on, you know, if it's not reaching a point where you know you can't handle, obviously that point needs to be recognized कि अब मेरे से और नहीं हो पा रहा. But if you're still not at that point, you know, you just hold on, it gets better. First 6 months are a struggle for everybody because एक तो काम बहुत ज़्यादा है, it's a new environment, we have not done this before, so it is difficult for sure for everybody, but I just want to tell you it gets better. कुछ महीनों में आपके जूनियर आ जाएंगे, it will get better, but don't do the क्योंकि सास भी बहू थी story with them कि मैंने इतना सहा है तो वो भी सहेंगे. Somebody has to change this system, right? And you don't just have to be mean to somebody just because somebody was mean to you. So somebody has to get up and change it one fine day कि नहीं, I will not be mean, okay? बाकी जो लोग कर रहे करने दो, you know, you can't change the system yourself, you can change yourself. So yeah, it does get better. It is tiring, but when you reach a point कि मेरे से और नहीं हो रहा, speak up. ऐसे अपने अंदर मत दबाए रखो कि ये तो मुझे सहना ही है. It's not about that, you know. आपको सहना नहीं है. You are one of the brightest minds of the country. Remember you this. have gotten a seat which many people, you know, would be dreaming of. So don't suffer in it. Enjoy it. अगर enjoy नहीं कर रहे हो, suffer कर रहे हो, you have to go to the right people and tell that I am suffering. Please correct it before I do something else. Right now there are many outlets, you know. Use Twitter. Tag people who are relevant, you know, and behaviors change. So if there are behaviors which need changing, obviously some amount of hierarchy in medicine is always there. Absolutely. आपका senior आपसे rudely बात करेगा and there is not much you can do about it. तो कुछ चीज़ें तो आपको tolerate करनी है. But when you think it's crossing a line and it's crossing a line of disrespect and you know you feel कि और नहीं हो पा रहा, you have to reach out to people. You know, I have seen residents जो जाते हैं HOD के पास, जाते हैं director के पास, सर ये मेरे साथ हो रहा है, and behavior
opinions change, people accept their mistakes, okay? आपको वो लगेगा कि everybody in the department will hate me after हाँ this ऐसा होता and नहीं they'll है make my life difficult. ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल you know. So somewhere you have to speak for yourself, and the only option is not कि मैं resign कर देती हूँ and I'll start all over. Why are you doing that to yourself? So somewhere you have to put yourself first and others behind you, Absolutely. and that always remains true in life, I think. कि आपको और कोई अपने ना आप को कोई पहले- मिलेगा इट्स Yeah. नॉट लाइक कि एवरीबॉडी इज अगेंस्ट यू True. कोई अच्छा सीनियर मिलेगा कोई अच्छा फ्रेंड Yeah. मिलेगा इफ नथिंग एल्स कॉल योर स्कूल फ्रेंड Yeah. एंड टॉक टू हिम जिससे तुमने पिछले Yeah. 6 महीने में बात नहीं करी है Yeah, बिल्कुल. इवन दैट विल हेल्प Absolutely. Isolate मत Hmm. करो, speak up, talk to people who, you know, will remind you of sometimes हमारा reality check ना चला जाता है लाइफ से कि सब कुछ बस इतना टनल विजन रह जाता है कि मेरे साथ ये हुआ, बट इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स ये एक एपिसोड बहुत छोटा हो जाएगा, यू नो. आई वंस रिमेंबर, अभी मेरी एक जूनियर मतलब मेरी स्टूडेंट ही है, शी इज डूइंग रेसिडेंसी इन रेडियोलॉजी एंड फाइनल ईयर में है, बस एग्जाम आने वाली थी, उसके एचओडी ने उसको कुछ डांट दिया, कहती मैम मैं अभी छोड़ना चाहती हूँ, बहुत बुरा हुआ है मेरे साथ. मैंने बोला तो सोच, यू आर ऑलरेडी 2.5 years into it, you will look back, तो अभी तुमने छोड़ दिया, you will look back and you'll be like ये एक एपिसोड ने, एक 1 minute of patience ने मेरा पूरा करियर कोर्स चेंज कर दिया. Why are you giving so much power to that one person to determine what you will do in your life, right? So you keep yourself first, do your job well, अपना काम ढंग से करो, and बाकी जो बोल रहे बोलने दो. After a point आपको कान बंद करके अपना काम करना है, and don't let it bother you, you know. So yeah, that's what I like do. That's a very good advice. So now let's quickly jump to this rapid fire round. So let's start this Christmas special rapid rounds. So I call this rapid round ले लेते हैं. Like we do, I don't call it rapid fire. Sometimes I do. So your first question is, what is your secret productivity song या playlist? Oh, it keeps changing, but most of the times it's Punjabi song. Some Wow. Karan Aujla, Talvinder, एकदम वैसा टाइप का गाना, Punjabi song. Nice. Good beats. Which one do you fear more, God or examiner? I have no examiner now, so I have to say God. Oh, great. Yes. Which subject is your ultimate nightmare? Nat, I hate it. Okay. Yeah. Do you Google things or do you chat GPT things? I Google things. I still Google things. Oh, I don't know. I still have trust issues with ChatGPT. say. What do you prefer, group study or solo grind? Solo Solo. grind. Yeah. Favorite city or favorite country you would like to move if given a choice? I like Singapore a lot. Like Oh. very good air, very good infrastructure. Air, Yeah. pani, ye to Yes. khair. We'll not get into this. Yeah, at this point, any place other than Delhi would be good. Yes, But true. yeah. One thing you regret from your past? I don't know. I'm not somebody who holds regrets. I don't even remember actually. मैं जो regret करती हूँ ना, उसको मैं repress कर देती हूँ. Ma'am would understand. मैं repressed memory में चला जाता है, तो मुझे याद भी नहीं है. जो मेरी regrets है ना, I forgot it, suppressed. Wow. पर कुछ याद है, कुछ thing which you still dwell on, some bad episode from past? I mean, yeah, but वो थोड़ा ज़्यादा sad senti हो जाएगा. Like why? So we can skip. Yes. Yeah, I wish I got to spend more time, you know, with my parents once I moved out of my Oh. home, you know, Right. during MBBS. So since 2009, I've not been very, you know, frequent to my house. I wish I had more time with my family. Yeah. Where do you see yourself in next 5 or next 10 years? Again, not a big believer of past or future, but yeah, I mean, I think whatever I'm doing, I wish I am happy and content, and I don't have regrets even then. Do you remember a challenging case from radiology days? Many. In radio, I think there's so many unsolved Hmm. cases, but I always loved, you know, multisystemic cases. I remember there was one case which turned out to be IgG4 disease. That patient had been undiagnosed for many, many years, you know, multiple things. Thyroid में lesion था, IgG4 is multisystemic, pancreatitis. So pancreatitis इतना severe था, he would get, you know, recurrent attacks almost every month. Eventually फिर diagnosis बना था IgG4, and that's a very good diagnosis for a patient because वो responds very well to steroids. So I Acha. remember that we made that diagnosis back at AIMS. Oh wow. And that's why I keep teaching IgG4 to my students a lot कि ये पकड़ लेना because it's a treatable cause of pancreatitis, you know. So वो patient की life literally overnight change हो जाती है steroids से. Yeah.
Do you miss radiology? Mhm. I do. Yes, I do miss the practicing. thrill of reporting so many cases, seeing so many cases. I miss the thrill of interventional radiology. I do miss it, but because I get to teach it to Hmm. residents, I don't. I'm still content. Great, great. I think that's it. Yeah, This was a perfect. great podcast. Same. The feeling is mutual, and I had a great You'll- time. It didn't feel like a podcast. It felt like I'm talking to a senior or a friend. Thank you so much. Thank And you. really, really, it was a pleasure having you on Thank you this. so much.